अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया लेसन लेके आए इंग्लिश का, जो इंग्लिश मिस्टेक्स है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब इंग्लिश बोलते हो, आपको सही सेंटेंस आना चाहिए। आपको सही सेंटेंस कैसे आ सकता है कि आप गलत क्या सेंटेंस है और असली क्या सेंटेंस है। यहाँ क्रॉस है, टिक है, जो क्रॉस है वो गलत है, जो टिक है वो असली है। चलो शुरू करते हैं। आई एम अग्री, ऐसे नहीं बोलते, बोलते हैं आई अग्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज योर गुड नेम? इसका कोई मतलब नहीं है। हम बोलते हैं What is your name? Myself Ali. No, my name is Ali. आप नोटबुक ले सकते हैं, लिख सकते हैं, साथ साथ आपको आसानी से आ जाएगा। I didn't went there. Right, जो सेंटेंस है I didn't go there. I didn't go there. He do not know. He does not know. ये right sentence है. He does not know. She is my cousin's sister. ये गलत है. She is my cousin. ये right है. She is my cousin. I am having two brothers. ऐसे नहीं बोलते. I have two brothers बोलते हैं. I have two brothers. I am here only is the wrong, right one. I am right here. I am right here. He is my real brother. He is my real brother नहीं बोलते. He is my brother बोलते हैं. He is my brother. I did a mistake. I made a mistake. असली sentence है. I made a mistake. I am going to out of station. ये गलत है. I am going out of town. ये असली है. I am going out of town. I didn't knew that is wrong. Right is I didn't know that. I didn't know that is the right sentence. She is more better than me. Wrong. She is better than me is the right sentence. She is better than me. Off the light. ये wrong sentence है. Off the light नहीं बोलते, बोलते हैं turn off the light. Turn off the light. Passing marks is 40. Passing marks is 40. गलत है. Passing marks are 40.
राइट सेंटेंस है। पासिंग मार्क्स आर 40। Today morning I wake up late is wrong. I woke up late this morning is right. I woke up late this morning. ये correct sentence है। Discuss about this topic. Good sentence. Discuss this topic is the right sentence. ये असली sentence है। Discuss this topic. He is more taller than me is wrong. He is taller than me is right. So, asli sentence hai, he is taller than me. He passed away. He has passed away. ये भी असली सेंटेंस है he died. ये दोनों कह सकते वो फोर्थ हो गया. So he has passed away and he died is correct. I came by walk. ये गलत सेंटेंस है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. I came on foot. ऐसा बोलना चाहिए. I came on foot. This is the correct sentence. नोटपैड ले लिखते जाओ. She is cooking the food is wrong. She is cooking is the right sentence. She is cooking. So हम जब बोलते हैं she is cooking ये असली sentence है. Return back my money. Wrong. Return my money. This is the correct way. Return my money. End पे homework आएगा. Okay, अभी homework का time है. Correct the following sentences. आपने क्या करना है? आपने ये sentences देखनी है और ये correct करनी है. पेन ले लो, पेपर ले लो, ज़मीन पे लिख लो, जिधर लिखना आप लिख सकते हो. I am agree with you. Myself, Sarah, and I am from Karachi. He don't like tea. She is more beautifuler than her sister. Open the light please. और आपने क्या देखना है ये करेक्ट करने एंड वीडियो पे मैंने करेक्शन की है. सो आपने पहले लिखना है फिर एंड पे जाके देखना है आपने राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है. ये बहुत ज़रूरी है. आप आराम से सेंटेंस पढ़ो तो आपको समझ लग जाएगी. मैंने एंड पे दिए हैं करेक्ट करेक्शन. अभी आ रहा है नेक्स्ट पेज पे. सो प्लीज़ पहले ये पेज देखना फिर करेक्शन करना. सी हुए आपने कहाँ गलत किया है और आपने कहाँ सही किया है. अभी ये करेक्शन आ गया है. आई अग्री विद यू ये लिखना चाहिए. Me and Sarah are from Karachi. He doesn't like tea. She is more beautiful than her sister. Turn on the light, please. ये सब करेक्शन है. ये सब करेक्शन सेंटेंसेस है. आप पीछे जाके पहले पैड पे लिखें और फिर करेक्ट करें. फिर आके यहाँ देखें कि आपने सही किया कि नहीं किया. प्लीज़ कमेंट्स में बता देना आपके कितने पॉइंट्स आए हैं. आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.